Boss, I'm scared. I've spent the latter half of this weekend really understanding what is going on in the markets, and I have never ever seen a market situation like this. On one hand, by the way, happy Diwali. और अगर आपके दिवाली सेलिब्रेशंस खत्म नहीं हुए हैं, please don't watch this video. Watch it tomorrow. Anyway, I have never seen a market situation like this. This is unprecedented. On one hand, you have markets breaking its all-time highs. On the other, you have markets trading at its highest valuation it ever has. Have you seen the PE on Nifty? We'll come to that, but it's alarming. And volumes, it's like कुंभकर्ण खाना आगे सो गया है और पता नहीं कब उठेगा. Volumes are dismal. They are pathetic. I have never seen volumes so poor on a broad index like Nifty 50 ever. I have certain things that I want to tell you. और सोल्यूशन भी है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही प्रॉब्लम देके छोड़ दूंगा. सोल्यूशन है, पर मैं बताऊंगा आपको. लेकिन बॉस, इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में हो क्या रहा है. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट. दिस इज अ मैक्रो एलोकेशन वाला वीडियो जहां पे हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं. Don't tell me that, अरे you are तो bullish on ITC, you are तो bullish on Reliance. I am bullish on both of them. I am bullish on a lot more other stocks. But ये वीडियो हम एक मैक्रो इंडेक्स पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, एलोकेशन पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, ना ही हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं. सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू वॉच दिस वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू. एनीवे, मूविंग ऑन. अगर हम हिस्टोरिकली पी रेशियो की बात करें मार्केट की, जैसे निफ्टी की, वैसे पी रेशियो आई मीन इट्स अ वैल्यूएशन मेट्रिक वेयर ऊपर आपका प्राइस आ गया, नीचे अर्निंग्स आ गया, तो आपको एक वैल्यूएशन मिल गया. सो निफ्टी का जो वैल्यूएशन है, अगर आप हिस्टोरिक निकाल के देखो तो इट सी सॉस बिटवीन 11 and 12 बैक इन 2009 एंड 28-29 बैक इन 2007, जहां पे पूरा मार्केट तेजी में था. इट वॉज अ मल्टी ईयर बुल मार्केट. 2007, इफ यू रिमेंबर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरीथिंग, large cap, micro cap, kachra cap, mid cap, small cap, everything was trading at all time highs. And at that point of time, Nifty's valuation, broad market valuation, was somewhere around 28, 29. Do you know what the valuation of Nifty is today? Take a guess. Take a guess. Take a wild guess. Comments में section में मुझे बताइए. It's 34. It's 34 at a time when there is no bull market. We are not in a bull market. Boss, bull market में you have every tapri wala, chai wala, auto wala talking about stocks. Today nobody is talking about stocks. Today people on the ground are struggling. The economy is struggling. Bull market में everything is good. There is good news everywhere. Economy is doing very well. Everybody is talking about stocks. And at that point of time, we were just at 28p on the Nifty. And today, when the economy is struggling, everybody is struggling. Nobody is talking about stocks. There is no bullish sentiment on the street. You're trading at 34 times earnings. What sort of a skewness is this? मतलब ये हो क्या रहा है boss? And this has startled me boss. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. मेरे पूरे करियर में मैंने ऐसा टाइम नहीं देखा जो आज हो रहा है मार्केट्स में. As any investor and as a concerned market participant, I dug deeper. कि boss थोड़ा समझना तो पड़ेगा क्या हो रहा है. Okay, why is my Siri getting so excited? Anyway. And that led me to a revelation. My research led me to what is really happening. Take a look at the mid cap index and the small cap index. You'll find something very surprising there. They're not trading at an all-time high. In fact, the small cap index is almost at a 30-40% correction from its all-time high. Mid cap is around 20%. So on one end, you have Nifty 50, the largest of the largest companies, trading at sky-high valuations. Whereas on the other hand, you have everything else trading at pathetic valuation. मतलब पूरा सोया हुआ है, बाकी पूरा मार्केट सोया हुआ है, अकेला नाग अपना जगा हुआ है और फाड़ रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई फाड़ रहा है. Boss, here is what's happening. The whole stock market in India especially is driven by liquidity by institutions. अगर आपने ये टीवी शो देखा है हर्षद मेहता वाला, उसमें वो कैसे institutions का पैसा चैनलाइज करता है स्टॉक मार्केट में to rig the prices up. उसी तरह आज भी इंडिया में the stock markets, जो prices increase होते हैं, decrease होते हैं, they happen because of institutional liquidity. You and me, retail investors, don't drive up prices. What the institutions are doing right now, they are heavily focused on buying handful stocks. They're only buying Nifty 50 stocks. They're only buying largest of the largest stocks because it's a safe haven for them.
भाई आज इंस्टीट्यूशन है, या तो कोई पेंशन फंड्स है, हेज फंड्स है, बड़े बड़े कंपनीज है, बैंक्स है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ के जो फंड मैनेजर्स है उनको अपनी जॉब की पड़ी है। वो क्या सोच रहे हैं कि भाई लेट अस बी वेरी सेफ, लेट अस बाय ओनली वेरी हाई क्वालिटी स्टॉक्स, मार्केट लीडर्स, लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट, ताकि उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो तो अपने गले पे ना आए। इनका सोचने का तरीका ये हो गया है, नोबडी इज विलिंग टू गो एंड बाय दैट माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स, बिकॉज वो रिस्क एपेटाइट किसी का रहा ही नहीं है। अब इसी वजह से क्या हो रहा है, everybody is buying the same handful stocks, there is dearth of quality। अभी एक पॉइंट के बाद लिक्विडिटी तो मैटर करेगा ना, खत्म होगा ना, which is why what is happening, markets are rigging up I would say rigging up, but prices are appreciating constantly in all of these large cap stories। Here is a good news and a bad news। large cap indices में आपके निफ्टी 50s of the world में आपको आने वाले 2-3 साल कोई रिटर्न नहीं है। मार्केट क्रैश नहीं होगा बिकॉज कंपनी सॉलिड है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिटर्न नहीं है। That is not the pocket of opportunity that you should be looking at for the next 2-3 years. Unless you're very stock specific, unless you're looking at ITC where the valuations are so lucrative that it is very hard to ignore. Unless you're looking at a Reliance where it's a multi-decade story and you have to SIP into that stock. Unless you're looking at stories like that, SBI for that matter, अभी तो काफी बढ़ गया है, but when I had spoken about SBI, I think a couple of weeks back, it was trading at bad valuation, एकदम सस्ता था, एकदम, it was very lucrative. So unless you're very stock specific, large cap stories छोड़ दो। अगर एक मैक्रो पर्सपेक्टिव लेना है तो लार्ज कैप इज द लास्ट प्लेस यू वांट टू बी राइट नाउ। द गुड न्यूज, that's the bad news, that was the bad news. The good news is that small cap is trading, small cap indices and stocks in general are ripe for picking. So as a new entrant in the market, or even as a person who is consistently sipping into either mutual funds or ETFs, please consider small cap funds. That is one. If you're a stock picker, even better, you will find gold. This is the time to find gold in the small cap space because nobody is looking at it. Trust me, this is a situation where we had found ourselves between 2011 and 2013. आपको याद है क्या हो गया था? Broad market सोया हुआ, ripe. It was the right time to pick the small cap, mid cap stocks. I can name a few stocks if you want. Back then, you look at stocks like Ratnamani Metals and Tubes. You look at stocks like Relaxo Footwear. You look at stocks like Ashiana Housing. Of course, don't hold me to these stocks. These are not recommendations. I'm just telling you what happened. Please take advantage of it. Please take advantage of it. Don't fall into the trap of all-time highs and don't make stupid mistakes. Don't block your capital into subpar stories. हमारे पास limited capital है. We need the best bang for the buck. We need to be invested in those things which give us the absolute best home runs possible. हमको छक्का मारना है भाई हमारे कैपिटल से। हमारा कैपिटल सिंगल डबल लेने में टाइम पास मत करो। Because there is limited capital. You need to be invested in stories जहाँ पे एक लूज बॉल आया और आपने छक्का मार दिया, जहाँ पे रिस्क कम है, रिटर्न बहुत ज़्यादा है। Asymmetric payoffs, मैं उसको बोलता हूँ, ये something that I use very often to really give you a perspective of what the investment opportunity is. And you need to be looking for asymmetric payoffs, which today are not available in the large cap indices. Asymmetric payoffs are only going to be available in the small mid cap space because the valuations are so lucrative. आपका रिस्क आता ही वैल्यूएशन से, समझ रहे हो। दूसरी बात, स्मॉल मिड कैप स्पेस में देखना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गिरता हुआ फॉलिंग नाइफ पकड़ना है, नहीं। यू वेट फॉर ब्रेकआउट्स इवन देयर। वैल्यूएशन सस्ता मिलेगा लेकिन ब्रेकआउट्स पे ही खरीदना है बॉस। डू नॉट स्टार्ट बाइंग फॉलिंग नाइफ्स। आई एम टेलिंग यू दिस, इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल मेक इन योर लाइफ। डोंट डू दैट, यू विल बर्न योर फिंगर्स, यू विल बर्न योर माइंड एंड सोल, राइट। वेट फॉर गुड सेटअप्स टू प्ले आउट, wait for good breakouts, wait for good valuations. Valuations are already good in the small and mid cap space. Hathoda maro. Trust me, you'll do well over the next 2-3 years. That's it from me today. Have a great day. Cheers.